आज जो है वो प्रॉपर स्टार्ट करेंगे अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं कि आप लोगों को आवाज़ जो है वो मेरी प्रॉपर आ रही है? यस मैम, आ रही है। Okay, then I am going to share screen with you people on which I will introduce you with main concepts of object-oriented programming. First of all, we will just understand the, you can say, direct or simple meanings of those terms. Then we will move to the proper programming of object-oriented programming's paradigm. राइट हम पहले छोटी मोटी टर्म्स को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, फिर हम डायरेक्टली स्विच करेंगे टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग. What is the difference between that simple programming and this object oriented programming, right? So I am going to share screen with you people, and then I'll also give you the link of that web page. Uske alawa, if you people remember the book OOP using C++ that we people studied in last lecture, last semester, उसमें भी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा. यू विल फाइंड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस फ्रॉम दैट बुक. जस्ट टू कवर स्पीडीली आई एम यूजिंग दिस वेब लिंक्स, ताकि जो है इन जो है थ्योरेटिकल पार्ट को मैं फटाफट कवर करके we can move towards the programming part of object-oriented programming. We will also consult that book. Right now, I was unable to find that book in my mobile. अगर किसी के पास वो बुक है तो काइंडली CRGR या कोई भी और स्टूडेंट जो है वो उसको ग्रुप में शेयर कर दे once again. So I am going to share my screen with you people. Let me. Please see characteristics of object-oriented programming. There are some, you can say, names or terms are given, like there is written class, object, then encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction. What are these? First of all, let's start from the definition of object-oriented programming. Object-oriented programming, as the name suggests, uses objects in programming. Object-oriented programming aims to implement real-world entities. Entities means objects. Entities mean any physical thing. Entities like inheritance, hiding, polymorphism, etc. in programming. The main aim of OOP is to bind together the data and the functions that operate on them so that no other part of the code can access the data except that function. Okay, what happens in object-oriented programming? In object-oriented programming, we deal anything of the real world just like an object. For example, like if I am going to deal with some sort of information of a student, first of all I have to make a class of the name student, right? If I want to deal with the salary of an employee, I need to create class of an employee or a salary. C++ में क्या होता था, हम कहते थे सैलरी कैलकुलेट करें, सिंपली इनपुट योर सैलरी, इनपुट योर you can say scale or grade or whatever, then we deduct some tax, then we add some allowances, and then after that we calculate the net payable salary. But in object-oriented programming, we are supposed to first of all make its class. What is a class? Class is combination of two things: data, or you can say information, right? Data or information and functions, right? What let's suppose if I create a class employee,
Okay, what aspects of an employee I am concerned with? What does an employee do, right? And what information an employee contain? An employee का नाम होता है, employee's name, employee's gender, right? Employee's qualification, employee's salary, employee's post or designation. What are these? These are data or information about employee. What functions an employee performs? जो है employee क्या करता है? Employee it depends on you what sort of functions you people want to add in your class. Employee is present, this is a function. or employee is not present, this is a function. Employee salary, ये भी function है कि employee salary लेता है, ठीक है. अलग से बनाना चाहते हैं एम्प्लॉयज स्पेशल अलाउंसेस और बोनसेस, राइट. एम्प्लॉयज एज, लाइक अगर आप उसकी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं कुछ इस तरह भी जरूरी नहीं है. दीज आर नॉट फिक्स्ड और हार्ड फास्ट थिंग, right? It depends on the thinking of programmer, that what sort of information a programmer wants to add about that an object, about that object in his her program. उस पर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म के फंक्शन जो है उसके ऐड कर सकता है. लेट्स सपोज इफ आई क्रिएट अ क्लास पर्सन, राइट. अ पर्सन ईट्स, पर्सन वॉक्स, पर्सन स्लीप्स, ठीक है. पर्सन का ये उसके फंक्शंस है. person, what will be the person's data? Person's name, person's gender, right? Person's address, person's contact number. It depends on you कि आप किस तरह की उसके डाटा इंफॉर्मेशन अपनी क्लास में ऐड करते हैं, ठीक है, और किस तरह के फंक्शंस उसके मुताबिक ऐड करते हैं. नाउ व्हाट वुड हैपन by creating any class of any object, ठीक है. मैं एग्जांपल दे दूं. You can create class of a student, employee, right? You can create class of an animal, any object, any physical thing, ठीक है. उसकी आप क्लास मोस्टली अ फिजिकल थिंग, उसके अलावा नॉन फिजिकल थिंग की भी क्लास आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. आप क्लास यू वांट टू क्रिएट क्लास ऑफ एनी प्रोफेशनल, डॉक्टर क्लास हो सकती है, एक टीचर क्लास हो सकती है, आगे उसके टीचर के जो है वो लेवल आ सकते हैं, स्टूडेंट सॉरी यूनिवर्सिटी लेवल का टीचर है, कॉलेज लेवल का टीचर है, और स्कूल लेवल का टीचर है, सो ऑन. वी विल एक्सप्लोर एवरीथिंग एज we move forward, right? Okay. Now here a few terms are written. Class. Class का बताते हैं मैंने. Object. Object mean any entity. The, you can say, instance of a class is known as object. Okay. Now what does instance or object means? I'll suppose I created a class um student, right? I created a class student. Now there are many students in my class, BScs third semester. Okay. Suppose a student, one of the student is Ali, one of the student is Amna, one of the student is Aisha, one of the student is Ehsan. So what are these people? ये सबके सब क्या हैं? These are students. Right? These all persons contains the properties of a student. So मैं क्या करूँगी? First of all, I will write a class student. Then I will create multiple objects or multiple instances of that class. Amna, Ali, Aisha, Ehsan, Laiba, whatever. These all will be object, और जैसे variable create करते हैं. Like you create a variable integer. Integer is a general data type. You can create multiple variables of integer data type, right? There is no restriction. Integer A, B, C, D. What are these A, B, C, D? These A, B, C, D contains properties of an integer variable. In the same way, now student, you can say student is a data type. Okay, which what sort of data type we have created this data type. Now student is a data type. Now I'm creating variables नहीं हम यहाँ पे term use करेंगे. We will use instance or object. Now we are going to create object of this student class. You can consider class as a data type. You can consider object as a variable. Yeah, then I will write student Amna, comma Aisha, comma Ali, comma Ehsan, comma Laiba, XYZ. Now these all are just like just variables होते हैं ना. Now these are objects of student class. These all objects are contains the same information, right?
and the same functions which we have developed in our class. Clear? इतनी समझ लगी? Are you people getting my point? अभी तक if you people have any questions so far, please ask. अभी तक मैंने जितनी बातें की, all the things I have discussed, if you people have any query, any question कि जो अभी तक समझ ना लगी हो मेरे से बात करें, I'm just going to show you people and a class, how to write a class, right? Then you people will get my point. The purpose of object-oriented programming is to see everything as an object. What does an object means? An object has two things in it. First of all, data. You can also call it information, right? First of all, data and some functions. Like if I talk about myself, what is my data? Or every information about myself is data. Like my name, my qualification, my CGPA, my father name, my address, my contact number, my email ID. What is this? This is my data. ठीक है, डेटा चेंज भी हो सकता है, डेटा इज चेंजेबल ऑल्सो. What are my functions? Everything I do as a professional, as a teacher, as you can say housewife, right? जो भी मेरे functions हैं, जो भी काम मैं करती हूँ, those are my functions, right? So this is the simple concept of class. In object or in programming, we will create classes, then we will create object of those classes, and then we will use those objects. That how can we access objects data and objects functions. Clear? uh, the one of the most important aspect of object in programming is information hiding. But how can we say that we are hiding information? The few words were written encapsulation. Encapsule क्या होता है? उसके अंदर कुछ छुपा हुआ होता है, right? Some sort of medicine is hidden between that skull of plastic skull. उसमें कह सकते हैं आप. इसी तरह object programming hides the information from an other class, information of one class from an other class. Right? We cannot access the members of one class into another class. What are members mean? Those data members and member functions, two things. One other thing was abstraction. Abstractions mean we can access only particular information, only the मतलब कि जितनी information हमें चाहिए होगी, we will access only that portion of the information, not extra information, right? Then there comes inheritance. तो ये वो चीजें हैं जो आगे आके जैसे आएंगी, मैं आपको explain करूंगी, then you people will get to know कि हाँ, इस चीज का जो मतलब है वो ये है. Clear? Now I'm going to again share my screen with you people, on which an example of class will be written, and how can we write a class in our C++ program. मैम मैंने बुक शेयर कर दी हुई है ग्रुप में, तो आप हमें वहां से बता दें थोड़ा सा. मैं आपको वहां से भी बता देती हूँ, बट वट एवर आई एम टेलिंग यू पीपल इज जनरल.
आप कहीं से भी पढ़ेंगे आपको यही पता चलेगा। बुक से ये है, मैं थोड़ा बुक इसलिए अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि बुक में काम जो है ना वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, हम सीख नहीं पाते, बट जैसे उसके वो कंटेंट को हम कवर कर रहे होते हैं। हम थोड़ा रस्सा मांगे रस्सा गंदा उत्ते पे हुए चाहिए तो हो नहीं तो शादी से क्या रहा चाहिए यार तो sama माइक ऑफ कर लो।
जी बुक मुझे मिल गई है, मैं जरा उसका ना वो पेज फाइंड आउट कर लूँ कि कहाँ पे है जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ। ओके जी, आपके सामने बुक मैंने खोली, बुक का पेज नंबर है पेज नंबर 392, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने बात की, द here person object is being discussed, what are the data members, data of a person can be name, age, weight, okay? You people can add or remove according to your thinking or your requirement. Then there comes functions, right? uh, uh, the, in the book a car is taken. Now if I talk about car model, color, then price, engine power, this is the information about the car, mean these are the data members, right? And then if I talk about a proper class, then comes there declaring a class. uh, Come to the program 13.1, right? A class test is written. Now you can see the syntax. You will write it before main function. You will write class. Class is this is the syntax class. Then test is the name of the class, right? Void in. You will write a function in sorry. And then comes private colon. You have to write it as it is, private colon. Then after private you will declare data members or any variable in which you want to store some information. Here an integer variable is taken, intn. Clear? Then if you want to add or write some more variables, declare it here. आप मजीद वेरिएबल लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिखें. Then there comes public tab, public colon. Under the public tab, you will write functions here, right? What sort of function you want to avoid in? What does this void in function is doing? This function is taking input in n variable. Then void out. What does this void out function is doing? This function is displaying the value of n variable. What will happen? We will create an object of this test class. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट विल पोजेस टू प्रॉपर्टीज, वन डेटा मेंबर दैट इज एन. ठीक है, डेटा मेंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ एक वेरिएबल ही हो. डेटा मेंबर एन एंड दीज मेंबर फंक्शंस void in and void out, these will be the property of that object. ठीक है. Now comes to main function. In main function we are going to create an object just like a variable. जैसे int a variable create करते हैं, you will use test then obj or any other name. Obj means object of test class. Or what will happen, we will call the member functions
of your class in and out, ये दो member functions, ठीक है. We cannot access n data member directly. हम उस data member को नहीं directly access कर सकते, functions को access कर सकते हैं. वो data member कैसे access होगा? वो data member functions के अंदर access हो रहा है, ठीक है. If I call void in, what in is doing is taking input in n. ये काम करते हैं directly. Now we are using functions indirectly. Then we will call function out. What out function is doing? Out function is displaying n. ये काम हम पहले कैसे कैसे करते डायरेक्टली सी आउट लिख के सी आउट है, ठीक है. अब क्या करना है, मिशन फॉर सच पर्पस हमने इन एंड आउट के लिए उन functions को कॉल करना है. We cannot directly access n variable in main function. Always remember why, because we have written private before declaring n. Private means this n is accessible within the brackets of the class, not in whole program, not in main function, in class. क्लास की कर्ली ब्रैकेट्स आप देखें, उसके अंदर अंदर एन की लाइफ है. बट इफ आई टॉक अबाउट पब्लिक, आवर नंबर फंक्शंस आर ऑलवेज पब्लिक, right? Like void in, void out, these are accessible outside the class. We are accessing it in, right? But we cannot access n in main function because n is something private. Data members are always private and member functions are always public because we have to access them in the main function outside the class. Clear hai ji? Then look how we have how we are accessing in and out with the name of the object obj dot. Syntax के बारे में careful रहना. Obj dot in. What will happen here? In function will be called. Well, in function is doing, in function is taking input in n. Then obj dot out. Now what will obj dot out will do? Obj dot out will display n on the screen. जो उसकी body में लिखा है वो करेगा, right? ठीक है. Then main function will terminate and your program will come to an end. Now what will happen if you can create two objects as well? Test obj1 comma obj2. Now for both of the objects obj1 and obj2, two n data member will be created. obj1 का n अलग होगा, obj2 का n अलग होगा. Both are the you can say product of test class, ठीक है. अब obj को n अलग मिल रहा है, उसका अपना n है, obj2 को n अलग मिल रहा है, उसको अपना n. Then try to call both function with both objects, like call obj1 dot in, then in next line call obj1 dot obj2 dot n. Try to write try to give different values. obj1 के साथ obj1 के साथ in function कॉल करें, उसको इनपुट दें कोई वैल्यू. obj2 के साथ in function कॉल करें, उसको कोई और वैल्यू दें. then display, then use obj1 dot out, then obj2 dot out, and both of the out function will display the value of the ends of obj1 and 2 respectively. ठीक है. obj1 के साथ आउट कॉल करेंगे, वो उसके n की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा जो भी आपने इनपुट की है. obj2 को obj2 डॉट आउट कॉल करेंगे, वो उसके n की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा जो भी आपने ऊपर दी थी. क्लियर है जी? अभी तक के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है क्योंकि सारा कुछ मिक्स हो जाएगा. यू वी पीपल विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग टाइम के साथ साथ. तो अभी तक जो है, अभी आपने ये प्रैक्टिस करके देखनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है, या आप लोगों ने जरूर करके देखनी है, फिर ये आप लोगों को क्लासेस की समझ लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी. इसकी जो है वो प्रैक्टिस करके देखनी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट राइट दिस प्रोग्राम एंड क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स एंड दोनों ऑब्जेक्ट के साथ इन एंड आउट फंक्शंस को कॉल करके एग्जीक्यूट करके देखें कि व्हाट विल बी द डिफरेंस. क्लियर? एंड बुक का पेज नंबर आप लोगों ने नोट करिए. बुक पेज नंबर इज 392. तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे एक स्टेप आगे देखेंगे. एंड बी केयरफुल अबाउट द सिंटैक्स ऑफ द क्लास. क्लास के सिंटैक्स के बारे में केयरफुल रहे, कहाँ कॉलन लगना है, कहाँ सेमी कॉलन लगना है, वो आप लोगों ने केयरफुली देखना है. ठीक है. बिकॉज देयर इज नो जस्टिफिकेशन अबाउट द सेंटेंस के जी कॉलन क्यों लगाया, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया. वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. वो जो C++ में सेंटेंस डिसाइड हो गया हुआ, हमने उसी को फॉलो करना ही करना है. ठीक है. ओके जी. CR GR जो भी प्रेजेंट है, अटेंडेंस ले लिया आपने? जी मैम ले लियो.
कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग अपने पास रखें, नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछें, और ये प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर करके देखें, ठीक है। उसी तरह ऊपर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उससे पहले हैश इंक्लूड योर हेडर फाइल यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एंड देन राइट दिस प्रोग्राम, और एग्जीक्यूट करके चला के जरूर देखें। Inshallah, in next class we will proceed to the next topic of your object oriented programming.